in this particular video, we are going to learn about the distance protection. We'll start new chapter which is distance protection. So before proceeding further, I would like to mention some points that we had seen the overcurrent protection. So what are the drawbacks of overcurrent protection, and that cannot be used over the distance of transmission line. So the main drawback of the overcurrent protection is that the reach of the overcurrent relay depends on the there are two factors. Okay, it depends on two factors. The first one is what? The magnitude of current varies according to the type of fault. That we all know that the magnitude of current varies according to the type of fault. And the second one is that the changes in the source impedance for a particular type of fault. These two factors need to be considered. That I repeat once again, first factor is that the magnitude of current varies according to the type of fault, and the second one is that the changes in the source impedance for a particular type of fault. तो ये दोनों फैक्टर्स जो है वो आपको कंसिडर करना पड़ेगा. इसके लिए जो है मतलब ओवर करंट रिले आप यूज़ नहीं कर सकते हैं. ठीक है, देखिए यहाँ पे मैंने कुछ जो है वो ड्रॉबैक्स के लिए यहाँ पे कुछ जो है मैंने एक लाइन ली है, ये लाइन ली है, और ये जो है अपना जनरेटर है, और ये जो है कुछ EMF ई प्रोड्यूस कर रहा है, और ये जो है ये सोर्स इम्पिडेंस है. ठीक है, ये जो अपना जनरेटर है उतना यहाँ पे ये सोर्स इम्पिडेंस हमें मैंने यहाँ पे दिखाया विच इज़ Z in. ओके, सो सोर्स इम्पिडेंस और ये जो है ट्रांसमिशन लाइन है. दिस इज द लाइन अंडर कंसिडरेशन. ओके, सो कंसिडर अ सोर्स EMF E with constant impedance. See, in this case particular I am taking is constant Z in. Okay, यहाँ पे मैं कांस्टेंट सोर्स इम्पिडेंस यहाँ पे ले रहा हूँ. ठीक है, इस केस के अंदर तो फिर क्या होगा? सो द प्रोटेक्टिंग द लाइन सेक्शन, this particular line between this A B. Okay, so line section is that this to be protected. Okay, the protecting the section of the line, this is A B. Fine. Now let us take this I0 जो है वो है pickup current. Let us take that I0 is the pickup current of the relay. Okay, this value is designed for a default line to line ground fault. Let's say कि ये जो I0 है वो हमने डिजाइन किया कुछ ये जो है line to ground fault के लिए. Thus the relay reaches up to this point. अगर रिले आपके ऑपरेट हो मतलब इस पर्टिकुलर जो भी जोन है, मतलब ये जो इतने डिस्टेंस के लिए यहाँ पे अगर फॉल्ट होता है तो ये हमने डिजाइन किया रिले कि ये जो है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए यहाँ तक रिले जो है ऑपरेट कर जाएगी. ठीक है, सो दस द रिले रीचेस अप टू पॉइंट B फॉर द फॉल्ट LG. नाउ इफ द फॉल्ट वेरीज फ्रॉम, अगर फॉल्ट चेंज होता है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट से, अगर LG फॉल्ट मतलब कोई LG अगर फॉल्ट हुआ है, लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट हुआ है, देन द करंट चेंजेस and the relay reach changes to point B to B1. Is that right? Where the distance AB1, देखिए ये जो है AB1 डिस्टेंस, ये जो AB1 डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा? इज लेस देन AB. दैट मीन्स यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि AB1 इज लेस देन AB. Am I right? Okay, so this is under reach. This is called under reach. क्या बोलते हैं इसे? Under reach. क्योंकि हमने डिजाइन जो किया था इसके लिए, लेकिन यहाँ पे अगर कोई फॉल्ट हुआ तो ये देखिए ये तो अपनी अंडर रिच कहलाएगी. इसी अगर ये दूसरे केस में मैं अगर यहाँ पे लूँ तो ये कहलाएगा ओवर रिच. आप देख सकते हैं, आप लॉजिक लगा सकते हैं अभी कि यहाँ पे अगर बिटवीन A और B2 अगर आएगा तो इस पॉइंट पे तो ये जो है वो 3 फेज फॉल्ट के लिए डिजाइन है. ठीक है, सो दिस इज अंडर रिच, एंड सिमिलरली फॉर द 3 फेज फॉल्ट द रीच ऑफ द रिले चेंजेस टू पॉइंट B2 such that the distance A and B2 is more than AB. So I can write AB2 is greater than AB. Am I right? Okay, so this is called overreach, and thus the reach of the relay changes with the type of fault and which is desirable. Okay, देखिए अगर मैं कुछ अलग तरीके से आपको अगर समझाने की ट्राई करूँ, देखिए see what is the effect of fault current on the type of fault. ओके, फॉर एग्जाम्पल लेट अस टेक द जनरेटर विच इज हैविंग अ सोर्स इम्पिडेंस. ये जो है सोर्स इम्पिडेंस उसका है वो है कांस्टेंट, अभी मैंने लिया है. सो ये जो जनरेटर है, ये जो अल्टरनेटर है वो EMF को प्रोड्यूस करेगा विच इज E. ओके, विच इज E, एंड लेट अस टेक ZS. लेट अस टेक, देखिए
यहाँ पे कोई मैंने अलग ये जो है वो समझाने की ट्राई की है। सो ये जो है इम्पिडेंस है अपना, सॉरी ये जो है अपना ईएमएफ इंड्यूस्ड है, और ये जो जेड इन है वो है अपना सोर्स इम्पिडेंस। वो है क्या है? सोर्स इम्पिडेंस। इट इज हैविंग सम सोर्स इम्पिडेंस। ओके, जनरेटर का खुद का जो है इम्पिडेंस होता है सोर्स इम्पिडेंस, तो मैंने इसलिए यहाँ पे सोर्स इम्पिडेंस लिखा है। लेट अस टेक दिस इज कांस्टेंट एज ऑफ नाउ। ओके, जेड इन जो है अभी क्या है? फर्स्ट केस में कांस्टेंट है, अभी मैंने बताया कांस्टेंट है अभी। सो and three phase line is protected by overcurrent relay. That overcurrent pickup see यहाँ पे अगर मैं कोई overcurrent pickup ले लूँ, यहाँ पे कोई see pickup current कोई ले लूँ, तो वो pickup current बोलेगा वो है IPU. So this is the pickup current. और ये जो है अपना CT, और वो CT अगर ऑपरेट होगा तो ये CB को क्या करेगा? अपना ट्रिप कर देगा। ठीक है, सो यहाँ पे जो पर यूनिट जो भी है पर यूनिट करंट वो मैंने फिक्स रखा है। ठीक है, फिक्स्ड विच इज IPU। ओके, सो नाउ द अमाउंट ऑफ फॉल्ट करंट विल बी इक्वल टू द EMF दैट इज जनरेटेड डिवाइडेड बाय द इम्पिडेंस अप टू द फॉल्ट पॉइंट। आई रिपीट वंस अगेन, द अमाउंट ऑफ फॉल्ट करंट विच इज IF, okay, the amount of fault current will be equal to the EMF that is generated and divided by impedance up to the fault point. That means E by ZS, that will give you your fault current. I'm right? Okay, this is IZ in. Okay, E by this is the induced EMF and this is the Z in, which is impedance of this source. Fine, अगर fault होता है, so the fault current will be what? E by Z in for three phase fault. Okay, so let's start with the three phase fault. So if the fault happens at the bus bar only, at the bus bar only, within the bus at the bus bar only, then the fault current will be what? E by Z in. So as the fault happening farther end, see देखिए यहाँ पे अगर कोई fault हो रहा है farther end पे हो रहा है, so this transmission line impedance will also be add to your source impedance. इतना जो impedance है वो भी इसके अंदर ऐड हो जाएगा। ठीक है ना, इतना ये तो इम्पिडेंस है ही। अगर ये डिस्टेंस के लिए मैं लूँ तो इतना इम्पिडेंस आएगा, अगर ये डिस्टेंस के लिए लूँ तो इतना ज़्यादा इम्पिडेंस आएगा, और ये डिस्टेंस के लिए लूँ तो इतना ज़्यादा इम्पिडेंस उसमें ऐड हो जाएगा। ओके, सो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे कि एज द फॉल्ट हैपनिंग फार्दर एंड फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट, फ्रॉम दिस सोर्स एंड, so this transmission line impedance will also be add to your source impedance, so automatically fault current is decaying like this. देखिए यहाँ पे अगर मैं थ्री फेज फॉल्ट लूँ तो जितना इम्पिडेंस जो है वो कम बढ़ता जाएगा, तो ये देखिए इस तरह से, ये देखिए ये कम होता जाएगा, एंड इट स्टार्ट एंड इट कीप्स ऑन डीकेइंग लाइक दिस। फाइन, सो इट विल गो ऑन डीकेइंग लाइक दिस फॉर दिस थ्री फेज फॉल्ट। आप देख सकते हैं ये B2 पॉइंट पे, ठीक है, जो मैंने अभी आपको अर्लियर स्टेज में जो है वो समझाया था। सो let's take for LLG fault, and the impedance of the transmission line will be more, or you can say the impedance of fault will be more, so automatically fault current will be lesser than that. So you can observe कि यहाँ पे जो है वो इस तरह से कुछ डीके होगा करंट। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ कि for the line to ground fault it will be much more less in this particular case, so it will start decaying like this. ओके, सो डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस, देखिए यहाँ पे वो डिस्टेंस आप जो है वो देख सकते हैं कि ये जो है पर्टिकुलर, अगर मैं थ्री फेज फॉल्ट के लिए ले लूँ, ये जो है डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए, और ये जो है लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट के लिए, तो जितना फार्दर एंड पे अगर अपना फॉल्ट होगा तो क्या होगा कि इम्पिडेंस जो है वो आपका ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो लेट अस टेक द पिकअप करंट। ये जो पिकअप करंट है वो तो फिक्स्ड है अपना, मतलब सेट किया हुआ है। सो पिकअप करंट इज दिस इज दी, देखिए ये जो है ये पर्टिकुलर वो पिकअप करंट है। ठीक है, ये पिकअप करंट है। सो ये जो पिकअप करंट है वो यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ पे। सो पिकअप करंट जो है वो लाइन टू ग्राउंड फोल्ड के यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है, डबल लाइन टू ग्राउंड फोल्ड के लिए यहाँ इंटरसेक्ट, और थ्री फेज फोल्ड के लिए यहाँ इंटरसेक्ट हो रहा है। ओके, so the pickup current is intersecting these lines at different points, various points, and the यहाँ पे जो line to ground fault पे यहाँ पे जो intersect कर रहा है उसको बोले हम reach for line to ground fault, यहाँ पे जो intersect कर रहा है वो उसको बोल रहे हैं हम reach for double line to ground fault, और यहाँ पे intersect कर रहा है तो वहाँ बोल रहे हैं हम reach for three phase fault. So if line to ground fault happens, then it can protect up to your point B1. अगर लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट होता है तो आपका मतलब जो भी आप प्रोटेक्ट करेंगे आप
रिले के दौरान, ठीक है, तो वो B1 पॉइंट तक ही सीमित रह जाएगा. सो दिस इज द रीच फॉर द लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट. एंड यहां पे अगर मैं देखूं कि ये जो है B पॉइंट तक डबल लाइन टू ग्राउंड फॉल्ट वहां तक प्रोटेक्ट कर पाएगा, और B2 पॉइंट तक जो है वो थ्री फेज फॉल्ट जो है वहां तक B2 पॉइंट तक जो है वो प्रोटेक्ट कर पाएगा. सो डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फॉल्ट, up to how much distance your transmission line can be protected is changing. Or if you want to if you want that your transmission transmission line is operated up to this point B2, so for example in that case you have to adjust the value of this particular per unit current accordingly. But while designing a transmission line, we cannot say, or we cannot know the properly that which type of fault that going to occur on your transmission line. So now assume that the type of fault is fixed. Okay, यहाँ पे ये जो है वो कांस्टेंट सोर्स इंपेडेंस में लिया था, वो अब जो है ये टॉपिक खत्म करता हूँ. अगर दूसरे पॉइंट पे अगर मैं जाऊँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो मैंने क्या लिया, फॉल्ट इज सेम बट सोर्स इंपेडेंस इज वेरिएबल. सो नाउ एज्यूम दैट द टाइप ऑफ फॉल्ट इज फिक्स्ड. एज्यूम दैट टाइप ऑफ फॉल्ट, see, type of fault is fixed. So type of fault is fixed. So let us take this source impedance is variable. ये जो Z in है वो है variable. So तो fault current will be equal to what? हमें पता है fault current क्या होगा, जो भी EMF इंड्यूस है वो और उसका source impedance डिवाइड में, ठीक है, यानी कि Z in हमने लिया है Z in. ओके, अगर फॉल्ट यहां पे होता है, if the fault happens then fault current will be equal to this. Okay, so the lesser the value of this Z in source impedance, more will be the fault current. जितना ये कम होगा उतना ही फॉल्ट करंट ज्यादा होगा, क्योंकि हमें पता है फॉल्ट करंट की वैल्यू क्या है, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपॉन Z. तो ये Z in जितना कम होगा फॉल्ट करंट ज्यादा होगा, Z इंपेडेंस जितना ज्यादा होगा तो ये इतना कम होगा. ओके, so the lesser the value of this Zn, more will be the current IF, यानी कि fault current. So automatically more will be the distance that is covered. Okay, so this is the see, देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ particular इस point पे, so consider that the relay reach is designed for the current I0. देखिए ये जो है वो I0 के लिए डिजाइन की गई है with source impedance which is Z in 1. Okay, Z in 1. So I can say that this gives the reach of the relay up to point B, this B, ठीक है, यहां पर तक जो है वो सीमित रह जाएगी. If source impedance changes to Z impedance 2 such that, so क्या हो जाएगा उसके लिए, Z in 2 less than Z in 1, then the relay reach changes up to point B1 causing underreach. So if the source impedance changes to again Z in 3, देखिए यहाँ पे अगर मैं कुछ ये Z यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ है तो इस तरह से, और यहाँ से यहाँ तक चेंज हुआ तो कुछ इस तरह से होगा, Z impedance 3 greater than Z impedance 1. ओके, तो ये जो होगा वो क्या होगा, AB1 less than AB causing underreach. यहाँ तक हमने डिजाइन किया है तो ये पॉइंट हो जाएगा आपका AB1. तो यहाँ ये जो है वो क्या है, वो हो जाएगा AB1 और लेस देन AB हो जाएगा. ओके, डिपेंडिंग ऑन डिस्टेंस. और ये जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, यहाँ पे ये जो पॉइंट है अपना AB है तो ये क्या हो जाएगा, AB2 ग्रेटर देन AB, दैट इज कॉजिंग ओवररीच. ओके, सो दिस इज द फॉल्ट करंट वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम रिले ग्राफ. दिस इज लाइन इज कंसिडरिंग दिस, यहाँ पे कोई फॉल्ट हुआ है तो ये फॉल्ट जो होगा वो करस्पॉन्डिंग टू क्या हो जाएगा, Z फर्स्ट वैल्यू के लिए, Z in 1 के लिए. सो आई रिपीट वंस अगेन, नाउ कंसिडर दैट द रिले रीच इज डिजाइन्ड फॉर करंट दिस I0 with source impedance which is Z impedance 1 for a particular type of fault. Fine, so this gives the reach of the relay up to point B. If source impedance changes to Z impedance 2, this point such that this value should be here, and then the relay reach changes up to point B1 causing underreach. And if source impedance changes to Z in 3, again new value, such that this should be like this, Z in 3 greater than Z in 1, then the relay reach changes up to point B2 causing overreach. Thus the reach of the relay depending on the source impedance which is undesirable. Fine, due to these drawbacks
distance protection is used which depends on the ratio of voltage at relay point and the fault current. I repeat, due to these drawbacks, distance protection is used which depends on the ratio of voltage at relay point and the fault current. Let us take this देखिए ये जो है मैं आपको किस और तरह से समझाता हूँ. देखिए यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे जो है सोर्स इम्पिडेंस जो मैंने लिया है वो मैंने लिया है वेरिएबल लिया है. ठीक है, वो क्या लिया है मैंने, वेरिएबल लिया है. यहाँ पे मैंने कुछ सीटी रखा है. ठीक है, ये जो है वो पर यूनिट करंट की वैल्यू, और ये है जो अपना सर्किट ब्रेकर है वो तो आपने देखा ही है. ठीक है, सो अगर मैं देखूं कि यहाँ पे ये जो सीटी है, ये जो पूरा मैंने ग्राफ दिखाया है वो फॉल्ट करंट वर्सेस क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम दी रिले लोकेशन, वो मैंने दिखाया है. सो अगर मैं देखूं कि ये जो है रेशियो, इसका रेशियो क्या हो जाएगा हमें पता है. अगर फॉल्ट करंट हैपन हुआ, ठीक है, यहाँ पे कोई फॉल्ट करंट अगर हुआ तो क्या होगा, ई बाई ये जो हो जाएगा वो है जेड एस. देखिए अगर मैं पहले के लिए बोलूँ तो बोला जाएगा E by ZS1, this is taken depending on what is the value of generating, that is also fine. This particular fault current depends on the value of this particular induced EMF. ओके, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो ये जो जनरेटर है वहाँ देखिए कोई फॉल्ट अगर हुआ तो यहाँ पे कोई इफेक्ट भी आ सकती है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग डीमैग्नेटाइजिंग हम पढ़े हुए हैं. ठीक है, यहाँ पे सो क्रॉस मैग्नेटाइजिंग डीमैग्नेटाइजिंग वो भी इफेक्ट कर सकता है. सो दैट्स वाई इंड्यूस्ड ईएमएफ ई के ऊपर भी थोड़ा बहुत जो है वो डिपेंड रहता है. सो वॉट एवर द पैरामीटर्स यू आर टेकिंग इट शुड बी इंडिपेंडेंट ऑफ दिस पैरामीटर. ओके, सो आई हैव टेकन हियर द टाइप ऑफ फॉल्ट इज फिक्स्ड and let us take the source impedances variables. So ZS is variable here. Okay, so fault current will be like this, E by ZS. So if the fault happens, so the lesser the value of ZS, more will be the fault current. So automatically more will be the distance that is covered. So this for reach for the ZS3, this is the reach for the ZS2, and this for the reach for the ZS1. Okay, so ZS3 up to point B1, ZS2 up to point B, and ZS1 up to point B2. So lesser the source impedance, or you can say the more is the distance that is covered for a particular type of fault. So fault current is depends on the source impedance also. तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे इस फॉल्ट के लिए ये impedance की वैल्यू ये इस तरह से. सो ये जो हो जाएगा ये अपना हो जाएगा, ये कुछ वैल्यू है ZS3. यहाँ पे अगर कोई फॉल्ट है तो इस पॉइंट पे अगर मैं देखूँ तो ये जो वैल्यू है वो है ZS2, और यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो वो हो जाएगा ZS1. तो डिपेंड है आपके टाइप ऑफ फॉल्ट, और जो भी अगर फॉल्ट फिक्स भी है तो क्या हो जाएगा, फॉल्ट अगर फिक्स, देखिए ये फॉल्ट अगर यहाँ तक हुआ है, पहले देखिए यहाँ तो यहाँ तक जो है इम्पिडेंस की वैल्यू क्या थी, ZS3 थी, लेकिन यहाँ पे अगर कोई फॉल्ट हुआ है तो उसकी वैल्यू ऐड हो जाएगी. ट्रांसमिशन लाइन की इम्पिडेंस और यहाँ पे जो इसका इम्पिडेंस है वो वेरिएबल है. तो वेरिएबल है तो यहाँ पे इसकी जो भी इम्पिडेंस है वो ऐड हो जाएगी इसमें, और यहाँ तक इम्पिडेंस जो है वो ऐड होती रहेगी. तो अगर फॉल्ट फिक्स भी है लेकिन ये जो सोर्स इम्पिडेंस है वो वेरिएबल है, फिर भी जो है वो प्रॉब्लम आ सकती है. सो फॉल्ट करंट जो है वो डिपेंड है सोर्स इम्पिडेंस के ऊपर भी. सो द रेशियो ऑफ E by ZS1 इज टेकन and it is it depending on what is the value of generating, that is E also. Fine. So whatever the parameter you are taking, it should be independent of these parameters. It should be independent of type of fault, and it should be independent of characteristic of generator. That's why we are using distance protection here. Okay, so distance protection के लिए क्या करते हैं हम, देखिए अगर आप देख सकते हैं इसमें, सो मैंने यहाँ पे कोई दो फिगर लिए. सो ये जो है अपना सोर्स है, सोर्स, और ये है इंड्यूस्ड ईएमएफ, और ये है ZS, और यहाँ पे जो है मैंने कोई बस लिए, ये देखिए A है, और ये CT मैंने यहाँ पे लिया है, और ये PT है, और ये कुछ वैल्यू जो है मैंने सेट की है. ठीक है, ये जो है वो क्या है, Z सेट वैल्यू. इफ योर वैल्यू इज लेस देन Z सेट देन योर रिले शुड ऑपरेट. सो लेस देन Z सेट ये वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी है. ठीक है, ये फॉल्ट यहाँ पे कुछ हो रहा है, देखिए यहाँ पे मैंने ये कंडीशन लिया, तो इसकी इक्विवेलेंट सर्किट क्या होगी, देखिए ये जो है वो इक्विवेलेंट सर्किट है. तो ये जो हो जाएगा अपना हो जाएगा ये इंड्यूस्ड ईएमएफ E, उसका ये पर्टिकुलर सोर्स है तो उसका इम्पिडेंस होगा ZS, और ये जो है बस मैंने ली है E. ठीक है, और ये है RL और XL. सो RL और XL जो है वो क्या है, डिपेंडिंग ऑन वेयर द फॉल्ट हैपेंस, वैल्यू ऑफ RL एंड XL विल चेंज.
ओके, डिपेंडिंग ऑन, देखिए यहाँ पे कोई फॉल्ट हुआ है तो डिपेंड करेगा कि इसकी वैल्यू क्या है, ठीक है. सो डिपेंड्स ऑन वेयर द फॉल्ट हैपेंस, वैल्यू ऑफ आर एन एक्सएल विल चेंज. लेट्स टेक द वी आर विच इज रिले वोल्टेज, the voltage applied across relay actually. Fine, now we'll take IR which is the relay current, okay, which is the relay current. See the ratio of VR by IR will give you the this ratio, particular VR by IR, that will give you what is a value of impedance up to your fault location from your relay location. I repeat, this ratio VR by IR will give you what is a value of impedance up to your fault location from your relay location. So that will be independent of supply Z in, or you can say this ZS. So but if we take ratio V by R, देन प्रॉब्लम विल सॉल्व. ओके, तो यहाँ पे जो है टाइप ऑफ फॉल्ट के ऊपर डिपेंड नहीं करना पड़ेगा, ठीक है. लेट अस टेक दैट रिले measuring some value, which is relay is measuring the value of VR and the current IR, which is VR by IR, and which is set less than the Z set, then your relay will trip. So if this ZR is less than Z set, then your relay will operate in this particular case. So relay will operate if the value of this K1 I square is greater than this K2 VR square. Okay, this is the torque equation that we all know. This K1, this is the current, this is the relay current, and this is the relay operated voltage. Fine. So torque is positive. Torque is positive when the K1 I square is greater than K2 V square, or you can say the K2 VR square is less than the K1 I square, then your relay will operate. Okay, so rearranging this equation, we are getting VR by IR is less than under root of K1 by K2. Okay, so the value of impedance is less than the Z set. See, these particular ZR, this is the ZR and this is the Z set. Okay, then your relay will operate. So this particular value is less than Z set, then your relay will operate. Now what is this K1 by K2? That means this constants of respective relays, your respective relays, you can say the over current or you can say over voltage relay, and these coils are adjusted in such a way that the ratio can be adjusted K1 and K2. Okay, ratio can be adjusted K1 and K2 is equal to Z set. So in such a way which is that is adjusted. So this is independent of the type of fault, which is E and ZS. So जो भी फॉल्ट करंट रहेगा वो इंडिपेंडेंट रहेगा ये जो E और ZS से. इस तरह से हमें सेट करना है, ठीक है. सो इसके लिए हमें जो है वो डिस्टेंस प्रोटेक्शन जो इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा. सो द ऑपरेशन ऑफ रिले, सी हमने जो भी डिस्कस की है अभी तक की रिले वो क्या होगी. सो द ऑपरेशन ऑफ द रिले इज डिपेंडेंट ऑन द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट और वोल्टेज ऑफ द सर्किट टू बी प्रोटेक्टेड. सो इन डिस्टेंस रिले द ऑपरेशन इज डिपेंडिंग ऑन द रेशियो ऑफ वोल्टेज एंड करंट विच इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ इम्पिडेंस. फाइन. बेसिकली डिस्टेंस रिलेज आर कॉल्ड इम्पिडेंस रिले. डिस्टेंस रिले को हम बोलते हैं इम्पिडेंस रिले. क्या बोलते हैं? इम्पिडेंस रिले. ओके. See, the impedance is nothing but an electrical measure of distance along transmission line. I repeat, impedance is nothing but an electrical measure of distance along a transmission line. The relay operates when the ratio V by I, which is the impedance, is less than the predetermined value that I have discussed here. So the relay operates when the ratio V by I, which is the impedance, is less than a predetermined value. So as the ratio of V by I affects the performance of these relays, the relay are also called as the ratio relays. Okay, it is also called as ratio relays. Dependent on the ratio of V and I, there are three types of distance relay. See, dependent on the ratio of V and I, there are three types of distance relay. So the distance relay, first one is that the impedance relay, which is based on the measurement of impedance. Let us take
the example. See, dependent on the ratio of V and I, three types of distance relays are used. First one is impedance relay, which is based on measurement of impedance Z. Second one is reactance relay, okay, which is based on measurement of reactance. Third one is admittance, or you can say Moho relay, Moho relay is based on the measurement of component of admittance, which is Y. So as you can see here, these three are called distance relay, included impedance relay, reactance relay, and admittance relay. Impedance relay works on the impedance, reactance relay works on reactance, and admittance works on admittance. So in short, a distance relay is one whose performance is based on the measurement of impedance, reactance, or admittance of line between the location of relay and at the point where the fault occurs. I repeat, distance relay is one whose performance is based on the measurement of impedance, reactance, and admittance of line between the location of relay and the fault point occurs. So between these two, okay. So I hope कि डिस्टेंस रिले जो है उसका इंट्रोडक्शन जो है मतलब ओवर करंट रिले है वो क्यों हम यूज़ नहीं करते हैं आपको क्लियर हो चुका होगा. थैंक यू.